हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रवि शर्मा। और यार इस वीडियो में हमने लिया एक मॉक इंटरव्यू या क्या चीज़ होती है कि आपको एग्जैक्टली सिमुलेशन हम देने की कोशिश करते हैं कि आपके साथ वहाँ पे कैसा होगा। जैसे प्री और मेंस के मॉक होते हैं, वैसे ही मेन इसका इंटरव्यू का भी मैं मॉक कंडक्ट करवाता रहता हूँ जितना मेरे को टाइम मिलता है। तो इस पूरी वीडियो का फ्लो जो रहेगा, प्रोसेस जो रहेगा वो ये है कि पहले मैं मॉक इंटरव्यू लेता हूँ, फिर मैं उनको फीडबैक देता हूँ, फिर मैं उनको बताता हूँ कि 10 में से आपको मैं कितने मार्क्स दूंगा, और उसके बाद उनके जो डाउट्स आते हैं मन में वो मैं क्लियर करता हूँ उसी टाइम। तो आपको ये वीडियो का तभी फ़ायदा होगा अगर आप देखेंगे कि सवाल किस हिसाब के पूछे जाते हैं। उसके बाद आप जब पूरा वो देखेंगे उन्होंने कैसे जवाब दिए, फिर मैंने कैसे उनको फीडबैक दिया, तो मतलब कहाँ पे वो बेटर कर सकते थे या फिर कहाँ पे वो चीज़ें उन्होंने बोल दी जो नहीं बोलनी चाहिए थी, और उनके मार्क्स कितने आए और उनको आप मार्क्स कितने देंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ अगर आप अच्छे से देखेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा। और अगर आप भी मॉक इंटरव्यू देना चाहते हैं रवि शर्मा को, तो आप टेलीग्राम चैनल चैम्पियंस ऑफ रवि शर्मा ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पे मैंने पूरी डिटेल्स दी हुई है कि हाउ यू कैन गिव इंटरव्यू टू मी। ठीक है, तो दैट्स इट। तो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जस्ट क्विकली स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन। Good evening, sir. My name is Irfan Khan. I'm 24 years old. I was born in Muzaffarpur, Bihar, which is known as Kingdom of Lychee. I have done my high schooling from there, and I have done my schooling from Kathmandu, Nepal. Sir, I have done my graduation from Abhi Institute of Hotel Management in Hotel Management, which is in New Delhi. This is my third attempt and my first interview in IBPSPO. Okay, what about your family? What does your family do? And who all are Sir, there? overall, we are five. My father is a tailor. My mother is a homemaker. My younger brother is in second year of BCom, and my younger sister is in 11th standard currently. Okay, so you are from Muzaffarpur, and it is famous for the Yes. lychees, the delicious lychees. So what all vitamins you get from lychee? So obviously the vitamin C and vitamin D are there, but vitamin D are in very small quantity. I would say vitamin C, as it's more considered as a citrus food from citrus family, so there is abundant quantity of vitamin C. But sir, sorry sir, I'm not able to recall other vitamins currently, but I will look it afterwards. Okay, so any two famous personalities from Muzaffarpur? Certainly, sir. Sir, Mridula Sinha, Srimati Mridula Sinha, she was the first governor of Goa. She belongs from Muzaffarpur. And sir, a famous freedom fighter, Sri Yogendra Sinha, was also from Muzaffarpur, Bihar. Okay, you have done your graduation in hotel management, Yes. and I can see no relation whatsoever of hotel management and banking. So why you want Certainly. to waste your talent of whatever you have got in hotel management and you want to come to banking? Why banking? Sir, first of all, I wouldn't say that I will waste my talent. Sir, in my internship in Hyatt Regency back in 2018, I learned that the growth process in hotel management is very redundant. To be just a sous chef, which is considered as an assistant manager in kitchen, it takes nearly 10 to 12 years. Nice, sir. I thought I will pursue a career which will grow me in terms of both personal and organizational level. And so, while searching different career, banking was the field I thought that I would excel, and that why I chose it, sir. And both being, sir, in service sector, I definitely think that those experience will help me in banking sector also. Okay, so you what are the three qualities that you have inculcated through hotel management and that will help you in banking? So one, obviously the social skill. Throughout my hotel industry life, I have done many ODCs, stand for outdoor catering. We used to go in different hotels. The social skill I have developed is very crucial for any service sector. And so my emotional strength and mental strength are the key qualities throughout I have learned in hotel industry, as both have a very similar long shift hours, and also sir both give large exposure at a very shortened period of time. So I think these three quality will definitely help me. Okay, what according to you is a bank and how banks made profit? So bank are those financial institutions are registered under RBI. They basically take deposits from public and further process it to loans to different sectors. And also, sir, they perform non-fund based facilities as letter of credit and bank guarantees also. Okay, so what do you mean by letter of credit and bank guarantee? I don't know anything about it. And how would you tell layman in layman language
about letter of credit and bank guarantee? Sir, in a layman language, letter of credit is related to international terms and bank guarantee is related to national term. In letter of credit, it act as the most prominent feature for both buyer and the seller, to so that their financial obligation doesn't turn into burden. While in bank guarantee, it's between national level, in which different banks act as a security for the debtor who gets loan, and kind of security for the buyer also. What is a demand draft? So demand draft are under time deposits category of banking. So in demand, pardon me, sir, I think I have mistaken. Sorry, sir. So demand draft is a financial instrument through which money is sent through one branch of a bank to any other branch, and it comes under Negotiable Instrument Act 1881, and it is also dishonorable as the payment is done beforehand only. Okay, so assume that you are a customer. Sorry, I am a customer, and you are a cashier of your bank. So if I come at you at 6 p.m., would with a check, would you give me my payment or not? Sir, definitely after banking hour, first of all, the gate would most probably had been closed. But even if that you are able to enter in the banking, then I will, sorry sir, then I will tell you that please deposit the check and the amount will be credited to an account by just filling the saving from that person, saving form. I I I just want to get the money. I want the money in cash. I have filled the check. I came to you. You are there at 6 p.m. Would you pay me or not? That is the simple question. No sir. Sir, as far as I know, outside the working hours of bank, we are not allowed to pay. What are the working hours of a bank? Sir, it depends on bank to bank, but it's generally between 10 a.m. in the morning till 4:30 in the evening. Correct. So it for your kind information, I'm telling you that it is, if a customer comes before 4:30, it is payment in due course. After that, you are not liable to pay anything. Right? If you paid and something bad happens, then you are the liable person. Okay. What is a crossed check? Pardon me, sir. Crossed check. Sir, cross checks are a type of check in which there are two parallel lines drawn on top left or top right of the check. That means that the amount that should be credited to that person only, and also in not in terms of cash, that should be credited directly to that person's account. Have you heard of this word CTS? CTS. Yes, sir. CTS stands for Check Truncation System. It is a brainchild of NPCI through which the digital photo of the check is transmitted between two different banks. Okay, correct. Absolutely correct. Uh, have you heard of this word ATM? Yes, And sir. so I have indeed heard it. ATM is an acronym for Automatic Teller Machine, through which people can take their cash from their account. there is another word called BNA. What is that? Pardon me, sir. I'm not able to hear you correctly. BNA. PNA. Sorry, sir. I haven't heard that, but I will definitely check it afterward. Correct. So you have told me that bank accepts deposit and give loans and advances. So how many types of loans you have heard of? Sir, different type of loans as home loans, educational loans, MSME loans, agriculture loans, and sir, as far as I can remember, that only. And which are the loans comes under priority sector lending? So there are 10 sectors: agriculture, MSMEs, housing, uh, and social infrastructure, and for startups and MSME. Sorry, sir, I am only able to recall that. Okay, last question about banking is what is mortgage? So mortgage, whenever a person wants loan from a bank, he lends us some properties which are fixed asset, non-movable assets to the bank as a collateral so that he can take loan from the bank.
those are called mortgages. You have used the word collateral. What is collateral? So collateral is submitting any position to the bank just as a security that bank can give the loan that can be sanctioned on base of that collateral to the person. So no difference between collateral and mortgage. So collateral is more so about the process in which the person gives the his position to the bank, and mortgage is the non-movable assets. What are the hobbies that you told me? Your hobbies. So my hobby is Hobbies? cooking. So cooking. Only cooking is your hobby. Yes, sir. Certainly only cooking. Okay, so which type of cuisine you are comfortable in making or in more interested in making? So initially in my college days, I was more interested in Italian cuisine, which falls under Mediterranean cuisine. But nowadays, I'm more focusing on the North Indian cuisine we have. Okay, ठीक है. So next question is that suppose that I am a customer, right? And another case study I am giving you. ठीक है? Yes, sir. So I am a customer. You are the loan officer. I come to you for like 20,000 of loan. Only 20,000. I am a villager, and I'm telling you that I have this land of farming. So which loan would you give me, or just tell me which loan would you give me? Sir, as far as I know, there can be two types of loan. One that I will collateralize that land and give according to that land how much land he's holding, or there can be another type of loan on agriculture type, as if growing some agriculture crops. Then in short term or long term, I'll divide that and give loan according to that. Correct. The And second. sir, also it. Sorry, sir. Sorry to Yes, cut yes, you. yes. Go ahead. I'm saying that also it depends on the person, that if he's asking personal loan, then I will definitely collateralize that land. But if he's asking agriculture loan, then I will give according to that. Okay, so I was asking about the agriculture part, and this loan is called KCC loan, Kisan Credit Card loan. ठीक है? So Sir. this is the loan. So from this I can ask another question. Though I told you that was the last question, but I want to ask another question from banking. What is the difference between OD and CC, and what is the full So form? OD stand for overdraft and CC stand for cash credit. So overdraft are generally meant for personal uses, through which a person can meet his personal contingency. And so cash credit are for single owner businesses or any small businesses that can take certain amount of loan. I wouldn't say that as a proper loan, but for few they have a limit of taking that balance in negative to a certain point allocated by a bank through assisting their total assets or total turnover. Correct. So that's it. Last question is that who is your role model and why he is your role model, he or she? Why? So it would be very hard for me to pick single one, but I will say there are two persons, one my mother and one my father. So my father is definitely for the physical motivation he gives, the amount of work he's does. And in 2019, my father been through an accident, and that time the spirit he showed, that's still very vivid in my mind. And my mother is for that emotional heart and also the emotional strength she carries and she have forwarded to me. So both that's my greatest role model in my life. Last question is, tell me any three financial sector news from the budget. So the MSME, the total ECLGS stand for Extra Credit Loan Guarantee Scheme, has been raised to 130 lakh crore, and it has also been raised by 1 year. The tax that was not accounted on startup has also been increased by 1 year till 2023. And so the budget whole focus was on capital expenditure, and we have seen 29, which is approximately 30% increase in capital expenditure by government in the next year. That far as I am able to recall. ठीक है. So that's it from the interview. बात करते हैं. Thank you, sir. It was feedback की. It was great having a conversation with you. Correct. So before I say anything, I would you to give yourself marks out of 10. How many marks would you give yourself? So, I would give around 6.8 and 7, because
past interview I have done with my brother and sister, that was very fabulous. Even I marked myself near about 7.5 in that interview. Comparatively, it was not that good, but I need to improve my banking knowledge. I haven't revised that much yet. ठीक है, तो शुरू से बात करते हैं। देखो, पहली चीज जो इंट्रोडक्शन में है ना, इंट्रोडक्शन आपने बिल्कुल थोड़ा छोटा दिया है। आपको इंट्रोडक्शन में, ठीक है, 3-4 चीजें इन्वॉल्व करनी है और हमेशा करनी है वो, और वो हमेशा रटी हुई होनी चाहिए कि आपकी इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आप नाम बोलोगे, और नाम भी ऐसे शुरू करना है कि एज यू नो माय नेम इज दिस। ठीक है, मतलब क्योंकि उनके पास तो आपका लेटर वगैरह सब कुछ है ही, बायोडेटा फॉर्म वगैरह। ठीक है, तो पहली चीज ये। सेकंड चीज आपको क्या बोलनी है वहां पे इंट्रोडक्शन में, कि यू आर फ्रॉम दिस सिटी, दैट यू हैव वेल एक्सप्लेन्ड। ठीक है, थर्ड आपको बताना है यू हैव डन होटल मैनेजमेंट, जो भी है आपने कहाँ से की है और कौन से साल में की है। और उसके बाद आपको बताना है फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। ठीक है, और अगर हो सके तो ये भी बता देना कौन क्या करता है। उसके बाद आपने बोलना है कि मेरी हॉबीज ये है। ठीक है, हॉबीज शुड बी इंक्लूडेड। और उसके बाद जो लास्ट चीज, अगर आप में कुछ अलग है या फिर आपको लगता है यू हैव समथिंग स्पेशल दैट यू शुड मेंशन, एंड देन यू मस्ट मेंशन इट एज वेल। तो दिस शुड बी योर इंट्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, उसके बाद जो हॉबी है उसमें आप कुकिंग के साथ साथ कुछ और भी अगर इंक्लूड कर दोगे तो ठीक है, नहीं भी करोगे तो चलेगा, बिकॉज यू हैव दैट नॉलेज अबाउट कुकिंग। सो मेरे सर, ख्याल इसलिए से मैंने नहीं बोला हो, क्रॉस क्वेश्चंस के लिए नहीं बोला मैंने। हाँ जी, तो ठीक है, तो ये भी ठीक है एकदम। उसके बाद भी अगर पूरे इंटरव्यू की बात करें तो इट वाज गुड इनफ। ठीक है, इफ आई हैव टू गिव यू मार्क्स आई वुड गिव अराउंड 7 और 7.5। ठीक है, तो हम मतलब, बट यू हैव दैट कैलिबर, यू हैव दैट स्पार्क इन योर स्माइल, एंड यू हैव दैट कॉन्फिडेंस इन योर वॉइस, एंड you have shown with your persona that you actually have gone through the process of hotel management and you know how to groom yourself। तो वो चीज़ आपको हेल्प करेगी काफ़ी, और जो आपकी वॉइस है वो भी क्लियर है एकदम, तो वो क्लियर वॉइस भी आपको काफ़ी हेल्प करेगी। प्लस जो बैंकिंग की नॉलेज है आपने अच्छे से वैसे रटा हुआ है। ठीक है, बट उनको अगर आपको उनकी समझ है ना, तो उनको बहुत फास्ट मत बोलो कि मतलब यू गो विद दिस फ्लो, यू हैव टू गो हाँ, विद। ठीक है, तो पता ही नहीं चलता मतलब आप समझ क्या गया बोल सर। जा रहे हो कभी कभार। ठीक है, तो लगता तो है कि सही बोल रहे हो, बट वो एक्चुअल में बीच में आप गोलीबाजी भी कर रहे हो, वो भी पता चलता है कि मतलब आपको सही नहीं पता, फिर भी आप बहुत ऐसे फेकनेस से बोल देते हो कई बार। ठीक है, तो वो मुझे तो पता चल रहा था, पर मैंने उस टाइम बीच में रोका नहीं आपको। ठीक है, तो आपको जो जो मैं नॉलेज, कंफ्यूज हो गया था मैं ना उसमें, हाँ, ओडी और सीसी में, पता नहीं मैंने क्या बोला क्या नहीं। आपको भी नहीं पता, वो मुझे भी नहीं पता आपने क्या बोला ना, आपको पता है। तो जो चीज नहीं पता, और हाँ, जब भी कोई ऐसे टेक्निकल सवाल आए ना ये वाले, तो इस पे मेरा ये फीडबैक रहेगा कि आपको 1 या 2 सेकंड के लिए पॉज लेना है। ठीक है, सोचना है कि एक्चुअल में पूछ क्या रहा है बंदा, ज्यादा नहीं, 1-2 सेकंड। ठीक है, उनको बोला यस सर, ओके, तो फिर स्टार्ट करो, इतने में सोच लो। ठीक है, अगर आप सीधा ही बोलोगे अच्छा सीसीओडी ओके, फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, फिर आपको भी नहीं पता चलता आप क्या बोल रहे हो। ठीक है, तो ये ओके दूसरा पॉइंट है। और तीसरा ये है कि आपने पढ़ा तो है सारा बैंकिंग का, बट एक बार आप फिर से गो थ्रू करो। और आपसे बहुत ज्यादा डीप में नहीं पूछेंगे वो बैंकिंग का, क्योंकि यू आर फ्रॉम एंटायरली डिफरेंट फील्ड। ठीक है, प्लस जो आपने होटल मैनेजमेंट वाला जो भी है ये, ठीक है, हाँ। इसकी क्वालिटीज आपने बताई है, बट इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हो कि सर आई एम कंफर्टेबल विद पीपल। ठीक है, आई कैन टॉक टू देम वेल। उसके साथ एक और चीज बोलनी है कि ओवर द इयर्स या फिर ओवर दिस पीरियड ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड माय ग्रेजुएशन, आई हैव लर्नड हाउ टू बी पेशेंट विद पीपल, सो आई थिंक पेशेंस विल डेफिनेटली हेल्प मी इन बैंकिंग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ओके सर। ये दो चीज ऐड करोगे तो दे विल हैव अ बेटर इम्पैक्ट ऑफ यू। ठीक है, उसके बाद बैंकिंग की बात होगी, ये होगी हॉबीज में। ठीक है, उन्होंने जो भी पूछा है कि कितनी कुजीन होती है, मतलब क्या हाँ डिफरेंस, वो। आपको कौन सी अच्छी लगती है, तो वो आई थिंक दैट यू आर थॉरो विद इट। इसके अलावा बस यही है मेन। और मोटिवेट क्यों करते हैं आपके फादर मदर, ये भी ठीक है, आपको पता है, बट आई वुड से कि अगर वो बोलें कि अपार्ट फ्रॉम फैमिली भी पूछ सकते हैं कि अपार्ट फ्रॉम फैमिली हु इज योर रोल मॉडल, तो ट्राई टू
एक और आप तैयार करें, ट्राई टू प्रिपेयर वन मोर रोल मॉडल, कि वो क्यों है और क्यों है, क्या क्वालिटीज हैं जो अच्छी लगती हैं और उनमें से आपने क्या इनकलकेट किया, क्या सीखा। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक बाकी है बाकी आप बोलते ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है, आप वहां भी अच्छा ही बोलेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। आपका कब है इंटरव्यू? सर, मेरा है 26 को है, 1 बजे वाली शिफ्ट में, पैनल 6। पटना में? नहीं नहीं, पैनल 6 26 यहाँ पे, 62 नोएडा, दिल्ली नोएडा के में पास। है? हाँ ठीक है, तो बस यही है। बाकी आप मुजफ्फरपुर और बिहार के बारे में पढ़ लेना, आपने पढ़ लिया मुझे पता है, ठीक है, इसलिए मैंने ज्यादा पूछा नहीं। तो आप वो भी पढ़ लेना एक बार। पढ़ा। और बैंकिंग एक बार फिर से देखना, जो बिल्कुल बेसिक है वो ज्यादा अच्छे से करना, ठीक है। और बस ठीक है। और बीच में ना जो आप, जैसे मैं पूछ रहा हूँ बैंक क्या है और आप बोल रहे हो, आपने ठीक बोला, बट आप बीच में ऐसे ही एलसी और वो कहाँ से आ गए? आप तो अपने आप को खुद ही फंसा रहे हो। और आपने जो एलसी और बीजी का बताया वो कोई ज्यादा अच्छा भी नहीं बताया। तो आप ये बीच में ऐसे वर्ड्स मत यूज करो कि आपको जैसे बहुत पता है, ठीक है। तो आपको एलसी बीजी कुछ नहीं बताना, आपने बोलना है कि डिपॉजिट लेता है बैंक, लोन्स एडवांसेस देता है, जो बीच का इंटरेस्ट का मार्जिन होता है वो खुद खा जाता है, प्लस जो वो, ठीक है, ऐसे मतलब इस भाषा में नहीं बोलना, बट आपको समझ बोल गया। इंटरेस्ट में, डिपॉजिट पे कम इंटरेस्ट देता है, लोन्स एंड एडवांसेस पे ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। तो जो ये इंटरेस्ट स्प्रेड है, इससे हमारी अर्निंग होती है, प्लस जो बैंक सर्विसेज देता है ना, कुछ भी सर्विसेज दे रहा है तो उसके सर्विसेज से जो चार्जेस हमें मिलते हैं उससे भी बैंक अर्न करता है, प्लस जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट हम बेचते हैं इंश्योरेंस वगैरह, उससे मिलता है। तो तब आपका होटल मैनेजमेंट वाला आंसर लगेगा, और तब आपका अच्छे मतलब एक अच्छे एस्पिरेंट वाला आंसर लगेगा। आपका आंसर बहुत गलत लगेगा अगर आप मतलब बहुत ज्यादा बोलोगे एलसीबीजी। ये तो मुझे भी नहीं पता है, आई आई कैन टेल यू कि मुझे भी अच्छे से नहीं पता। तो आपको तो सर शायद नहीं मैंने ना, पता, और सिर्फ लाइन आप पढ़ लोगे रट लोगे तो उससे नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो उनको तो अंदाजा ही नहीं है कि आपसे ये पूछना, उनके तो मतलब दूर दूर तक सोच नहीं है कि आपसे ये पूछे, बट आप उनको गलत हिंट दोगे तो आप फंसोगे खुद। ठीक है, ओके मतलब ओके, आप समझ पा रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ गया सर। कुछ भी मतलब उल्टा सीधा नहीं बोलना जिसके बारे में नहीं पता, हाँ अगर पता है फिर बोल दो, ठीक है। कुछ भी आपने जो भी आपने ठीक बोला है कि यू हैव प्रिपेयर्ड सो मेनी क्वेश्चंस एंड सो मेनी आंसर, बट उस आंसर्स में से ये जरूर देख लेना कि इससे क्रॉस क्वेश्चन और क्या आ सकते हैं, ठीक है। देन यू विल बी फुल्ली प्रिपेयर्ड, ओके, and keep giving mocks to your brothers and sisters, to डेफिनेटली। तभी आप मतलब फ्लो में आएंगे, और आपका फ्लो ठीक है, एंड आई कैन सी कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। बाकी माय बेस्ट विशेस आर विद यू, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। सर पहले तो वो इंट्रो वाला, कि मैंने इंट्रो ना जानबूझ के ज्यादा लंबा नहीं किया, क्योंकि मेरे को ही थोड़ा ऐसे रिडंडेंट लग जाता है कि इतना लंबा क्या बोल रहा हूँ मैं, पूरा 1 मिनट पहुंच जाता है, तो नहीं इसलिए मैंने एक उसको बहुत मिनट छोटा कर लिया है। ये आराम से, जो मैंने आपको चार पांच चीजें बोली बस यही बोलनी है आपने, हाँ और ये आप कम से कम 50 सेकंड के अंदर क्लोज करो बस, ठीक है। हो जाएगी 50 में। आप क्या करते हैं, आपके फैमिली वो मत बताओ, बस बता दो आई हैव 5 मेंबर्स, बस ठीक है, ठीक है। और उसके ठीक बाद है सर। कुछ बता दो, और उसके बाद बस ये बता दो कि कुछ है तो आप में खास। डीप मैं चाह रहा हूँ कि वो डीप घुसे, तो मैं डीप जस्टिफाई कर सकूं, पर जो ये सिंपल टर्म्स हो ना, सिंपल टर्म्स को वन लाइनर जवाब देने में मेरे को बहुत दिक्कत हो जा रहा है। मैंने अपने प्रीवियस मॉक में भी देखा कि ना, मैं थोड़ा लेथार्ड लंबा कर देता हूँ आंसर को, तो मेरे को बट कॉन्ट्रैक्ट करने में दिक्कत। अगर आप सच में बहुत कंफर्टेबल हैं तो फिर आप घुसो फिर डीप में, दैट वुड दैट इज मैंने ऑल आई कैन से। मतलब जितना मैंने पढ़े, मतलब थोड़ा बहुत पर यूपीएससी वगैरह की भी बुक मेरा मेरा पढ़ी मैंने। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आपको आसानी से कोई चीज मिल रही है तो आप क्यों उसमें पीछे पड़ रहे हैं। और हाँ आप बिल्कुल ये मत सोचो कि अगर आप ग्रेड बी के एस्पिरेंट हो तो आप उस बंदे को जितना पता उतना नहीं पता। नहीं, वो 30 साल का एक्सपीरियंस है, ऐसा कुछ वो पूछेंगे ना और उनको लगेगा कि ज्यादा स्मार्ट गिरी दिखा रहा है, तो वो दे कैन वेट यू एनी टाइम। इवन आई कैन आस्क यू समथिंग जो आपको नहीं पता होगा, ठीक है। वो ऑब्वियसली वो तो तभी वो मैंने मतलब मॉक लिया ना, बस थोड़ा मतलब थर्ड पर्सपेक्टिव लेने के लिए, क्या है क्या नहीं। तो वो बस यही पर्सपेक्टिव है, यही पॉइंट है कि भाई चाहे पता भी है
मतलब अभी जैसे मुझे भी बहुत कुछ पता होगा, बट मैं कस्टमर को सब कुछ थोड़ी बताता हूँ। उसका तो जितना काम है बस उतना करके मैं उसको भेज देता हूँ। हाँ, उसको थोड़ी समझाऊंगा कि भाई एनईएफटी के इतने बैच जाते हैं, ये होता है। बस उसको बोलता हूँ भाई कर दिया, बस हो जाएगा आज शाम तक, बस खत्म। ठीक है, समझ रहे हो आप क्या कह रहा हूँ मैं, है ना? समझ गया। और सर एक क्वेश्चन था कि मतलब बहुत अभी एसबीआई पीओ के इंटरव्यू में ना बहुत वो हो रहा था, ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। तो ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में मार्क्स मिलते हैं कि उसको कैसे टैकल करते हैं उस पे मार्क्स मिलते हैं, कि फॉर पर्सनैलिटी पे मार्क्स मिलते हैं, कि नॉलेज पे मार्क्स मिलते हैं, वही समझ नहीं आता। वो तुम्हें एनालाइज नहीं करना यार, जब आपका काम है प्रोसेस वही करो बस आप। वो अपने आप देखेंगे, आप बस ओवरऑल तैयार होके जाओ। ठीक है, बाकी आप में कोई ऐसी कोई कमी वाली बात नहीं है, बस जो है सही है। ठीक है, थोड़ा और प्रिपेयर करते रहो, ओके सर। बाकी ऑल गुड। ठीक है, तो दैट इज इट।